Hi, do you believe in love at first sight? या मैं एक बार और गुजरूं? Hey baby, you are the reason men fall in love. Please help me get up because I'm falling in love with you. बस यार, enough is enough. यार मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है. हाँ, और शायद इसलिए आई मस्ट स्टॉप एक्टिंग लाइक सच ए लूजर, क्योंकि द ट्रूथ इज दैट इस तरह की लाइंस बोलने से या लड़की ताड़ने से कोई माचो हीरो नहीं बन जाता. हमारे स्टार्स को ही देख लीजिए. वी फील दैट ये एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, एंड द रिमेनिंग टाइम दे जस्ट चिल और हिट द जिम. वेल डूड्स, यू आर सो रॉन्ग, और मैं इस बात को प्रूव करूंगा ऑन दिस ब्रांड न्यू शो बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट टू यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट. लिव फियरलेस. हम आपको ले जाएंगे रियल वर्ल्ड के ग्लैमर एंड ग्लिच से दूर एंड शो यू व्हाट रियल हीरोज आर मेड ऑफ. हम आपको बताएंगे कि कैसे ये हॉट एंड हैपनिंग मैन हमेशा अपने दिल की सुनते हैं और दिल की करते हैं. दे फॉलो देयर इंस्टिंक्ट्स एंड लिव fearlessly. And today we begin by taking you beyond the filmy dunya of Bollywood's best looking hunk, a man who keeps raising the bar every day, and I don't mean a dumbbell, the one and only John Abraham. Some actors are born with a silver spoon in their mouth. उनके dads established stars होते हैं and there are production houses in place for them. जन्म लेते ही सब उनके एक्टर बनने का वेट करते हैं. But then there are those who become actors by chance, who have no big names supporting them or famous last names. लेकिन अपनी मेहनत और डेडिकेशन से they journey to the top and achieve success that only a few can dream of. और आज हमारे उन्हीं स्टार्स में से है वो स्टार who is a self-made man in every sense of the word. वैसे तो people can't stop gushing about his rippling muscles or his cute dimples, but there is so much heart to him कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे. जी हाँ, John Abraham, perhaps the hottest Sagittarian on the planet, had very simple beginnings. Not too many people know कि John के dad है एक Syrian Christian, while his mom is a Parsi. Yes, what an interesting combination. While John's dad and brother are architects, John ने अपने सपनों की अलग ही दुनिया कंस्ट्रक्ट की है. But for the longest time, he was just another cute boy next door. Unlike many star sons जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, John was a sincere student who completed his school and college and even did an MBA. Well, hard to believe that. John the hottie has both brawn and brain, and that definitely takes his hotness quotient up by several notches. In fact, John मॉडल बनने से पहले 9 से 6 की नौकरी भी करते थे as a media planner. In fact, अगर उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग के कीड़े ने नहीं काटा होता, तो poor John may have ended up being a good-looking media planner. फिर इस कंट्री की सारी कुड़ीज का क्या होता? मुंबई की सड़कों पे आज एक्सपेंसिव बाइक्स चलाने वाले जॉन कभी बसेस और ट्रेन्स के चक्कर लगाते थे और ट्रैफिक में धक्के भी खाते थे. बट चलते चलते आज वो कितनी दूर आ गए हैं. उनकी स्टोरी का पहला टर्निंग पॉइंट था विनिंग अ रिनाउंड मॉडल हंट, एंड देन द रेस्ट दे से इज हिस्ट्री. इस कंपटीशन को जीतने के बाद जॉन गॉट द चांस टू ट्रैवल एंड वर्क विद सम ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडलिंग एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड, एंड सून इनफ वो बन गए इंडियाज हॉटेस्ट मेल सुपर मॉडल. What an amazing journey from the boy next door to every woman's dream. John ने अपने simple background को अपनी strength बनाया, not an excuse to achieve anything lesser. A successful self-made man who has kept in touch with his roots. A man who has made it all on his own steam. जो बिना डरे fearlessly आगे बढ़ते गए, and what could be more attractive to a woman? शायद यही simple charm बन गया the reason for John's rise to stardom. अभी तो हमने जॉन के बारे में बातें बस शुरू की है and he is already setting benchmarks. Guys, when we were young, मतलब I'm still young. Anyway, the point is हमने कितना टाइम फालतू कामों में वेस्ट किया है. मतलब कब तक क्लूलेस रहेंगे हम. उठो मेरे देसी बॉयज, लुक एट जॉन. उन्होंने अपने जिस्म का कितना अच्छा उपयोग किया है. Well, by the turn of the century, John was a successful supermodel waiting in the wings of Bollywood. जी हाँ, he had the looks, the physique, the charm. तो जरूरत थी सिर्फ एक ब्रेक की, and that came with Jism in 2003. लेकिन ये रास्ता भी नहीं था आसान, but John उनमें से हैं who believe that when the going gets tough, the tough gets going.
John Abraham made his debut with much fanfare since he was already a well-known model. लेकिन जहां एक तरफ fans and critics उन्हें अपने hard work, dedication and fitness के प्रति commitment को praise कर रहे थे for his acting skills, they felt that he needed much improvement. लेकिन John हार मानने वालों में से नहीं थे. While he struggled to be accepted as an actor, he had already created a space for himself as a sex symbol. लेकिन unfortunately, Bollywood को उनके जिस्म के beyond उनके acting skills को टैप करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया. सक्सेस का साया उनसे दूर भाग रहा था एंड जॉन ने भी बार-बार सिर्फ उनकी फिजिकलिटी को एम्फसाइज करने वाले रोल्स लिए, which was not helping his popularity. But हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. And like someone has said, डर के बाद अगला बस स्टॉप जीत का है. And John began his ride to success with Dhoom. But the journey was still not easy. अपने करियर ग्राफ में जॉन ने कई ups and downs देखे. There were years जब पूरे साल में he had just one film releasing. But उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. He is a man who never gives in to his fears. While Bollywood wanted to stereotype him as a hunk who could perform with his muscles, John kept pushing the envelope. Critics का काम है criticize करना, and John had to read some very unflattering things about himself. He was labeled Braun Abraham or Gone Abraham when his films flopped back to back, and directors refused to work with him a second time. While several of his offbeat choices didn't exactly create magic in the box office, and people wanted to write him off as the dude whose films were box office duds, John soldiered on. And उनकी यही strength, उनकी humility and his willingness to learn उनका appeal बनती गई. But all the hard work paid off with films like New York, Dostana, Houseful 2, Force and Desi Boys. John has finally come into his own. लोग उन्हें pin-up boy कहें या फिर wooden hunk, box office revenues don't lie, and John has finally carved a niche for himself. भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. But looks like John is having the last laugh now. He has launched his own production house, whose first project was the very successful Wiki Donor. The figures speak for themselves. John's maiden production venture has raked in almost 40 crore rupees in the box office earnings. किसको लगा था that a movie on an issue like donating sperm would become such a big box office hit? जी हाँ, आगे जाके भी if John continues to use his skills as a producer well, he may end up adding another feather to his Bollywood success ki topi. He has a couple of more projects in the pipeline. In addition, John has also launched his own line of clothing, which specializes largely in denims. Badhiya hai, we may not look as good as you, but maybe your designer wear will inspire your fans to be in your shoes someday. Well, John, the bade and buzurg have told us कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. And looks like आप इस बात की best मिसाल हैं. You have truly walked a difficult road to success. At every step of the way, when your detractors said कि ये आपसे नहीं होगा, आपने डबल मेहनत की, and today John Abraham is truly a force to be reckoned with. I am really blown away by this guy. कितना मुश्किल होगा रोज अपने बारे में नेगेटिविटी को फेस करना, but to still face the world with that $1 million smile and keep trying fearlessly to win. And before you feel that that's all John has done, let me correct you, my boys and girls of course, because जहाँ जॉन इब्राहिम आता है वहाँ पर लड़कियाँ कहाँ होनी चाहिए ना. लेकिन इससे पहले कि I tell you the real good stuff, we need a छोटा सा break. जी हाँ, बुरा ना मानिएगा, टेलीविजन है, ब्रेक बनता है. We'll be right back with Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Live fearless. While there is no doubt that John has one of the best physiques in the business, he also has the best heart. A socially responsible citizen, he is associated with several causes, the most important being his dedication to PETA and the cause of animal welfare. लेकिन इसके बारे में और जानने के लिए you will have to come back after a very short break. तो देखते रहिए Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno. Live fearless. Six, 7, 8, 9, 99, 100. Don't be shocked. अरे जॉन, ऋतिक, रणवीर सब ने मुझसे ट्रेनिंग ली है. आपको क्या लगता है ये बॉडी मैंने ओवरनाइट बनाई है? बट दिस एपिसोड इज नॉट अबाउट मी. और वैसे भी मैं जॉन को ओवरशैडो नहीं करना चाहता. फेंकना मत. सॉरी यार, यहाँ बहुत डेंजर है, लगता है जॉन को फुल फोर्स में बुलाना पड़ेगा. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वेलकम बैक. यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन, ब्रॉट टू यू बाय ज़ेनो डिओड्रेंट. लिव फियरलेस. जी हाँ, आप अपने सही डेस्टिनेशन पहुंच गए, जहां स्टार इन द स्पॉटलाइट टुडे इज द वेरी डैशिंग एंड वेरी सेक्सी जॉन इब्राहिम. वैसे तो मोस्ट मैन दीज डेज हैव बिकम जिम बफ्स. हर किसी को माचो दिखाना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हर कोई लड़की हमारे ग्रुप में पड़ जाए और मैं ग्रुप का डूड बन जाऊं, राइट?
रॉन्ग। इसलिए तो लाखों में कोई एक ही जॉन इब्राहिम बन सकता है। लाइफ का असली मतलब है दूसरों की जिंदगी को बेटर बनाना, यूजिंग व्हाट यू हैव टू फुलफिल योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जॉन को ही देख लीजिए, हिज रियल लाइफ में भी अबाउट ब्रावाडो एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन उनकी रियल लाइफ बहुत हटके है। He has channeled his resources and fame into creating awareness about important social issues. Muscular and unbreakable दिखने वाले जॉन अंदर से बिल्कुल सॉफ्टी आइसक्रीम की तरह। A kind and sensitive man who is continuously thinking of how to fulfill his social responsibilities. Hard to believe? Well, it's true. Well, जहाँ कुछ सेलिब्रिटीज को सोशल नेटवर्किंग साइट से फुर्सत नहीं मिलती, वहीं जॉन हैज यूज्ड हिज पोजीशन एज अ पब्लिक फिगर टू ब्रिंग अटेंशन टू मेनी कॉजेज। द कॉज क्लोजेस्ट टू जॉन्स हार्ट इज द कॉज ऑफ एनिमल राइट्स। जी हाँ, जॉन may spend 2 hours a day in the gym, but he spends much more time on causes close to his heart. He joined the famous environmentalist Mike Pandey to create a safe haven for endangered elephants in South India. वैसे आप पूछेंगे कि इसका आइडिया जॉन के पास कैसे आया? तो भैया, the funda is very simple. जॉन का कहना है that since his dad is an architect, वो बड़े हुए learning the importance of living spaces and homes. और 2 + 2 makes 4. उनकी माँ एक बहुत ही active social worker है, which taught him the importance of caring for others and protecting the weak. शायद अपने इसी upbringing की वजह से जॉन is one of the most socially responsible actors in the business today. बहुत कम लोग ये बात जानते हैं that thanks to John's efforts at convincing government officials and collecting funds, आज the gentle giants of the forest have a safe haven to live in. That was just one of his efforts at improving the conditions of the animals. जब जॉन को पता चला कि तमिलनाडु में जलीकाटू नाम के एक स्पोर्ट में innocent bulls मारे जा रहे हैं, he sent letters to the government officials to ensure कि इस violent sport को बंद कर दिया जाए. In fact, कुछ साल पहले John even championed the cause of birds in cages. He modeled with an empty bird cage and spread the message. Birds aren't meant to learn silly human words or swing in a cage. They are supposed to fly free in the skies and sing songs for each other. John is currently actively involved with the Save the Tiger campaign and is producing a film on the subject with documentary filmmaker Mike Pandey. The film will take 2 years to be made. It has to be shot at real locations with tigers around, says John. इसके साथ जॉन ने मुंबई के पॉपुलर हॉर्स राइड्स के खिलाफ भी आवाज उठाई है, since they are not fed and looked after properly. John PETA की supporter है, and he says that he's willing to shout from the rooftops in their support. A proud vegetarian, John has even modeled with Aditi Govitrikar for PETA India. Dressed in clothes made from veggies, the 2 supermodels encouraged people to let vegetarianism grow on them. In fact, on-screen villains के साथ मारपीट करने वाले जॉन को रियल लाइफ में इको वॉरियर का अवार्ड मिला है। हमें लगता है that John only flexes his muscles on screen, but he has used the power of his fame and popularity to support meaningful causes. Well, a toughie who cares is the perfect recipe for desirability. So cool यार, I really didn't know that John ने elephant habitats के लिए भी काम किया है. Well guys, the truth is John is one of those few socially responsible actors in the industry today. And before you feel कि wildlife is his only passion, मैं आपको बता दूं कि John has not restricted himself to just one cause. जी नहीं, माने डशो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हैं हमारे जानो भैया। जी हाँ, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि द क्रिटिक्स हैव बीन वेरी काइंड टू जॉन। उन्हें कभी रियल लाइफ में भले ही किसी ने वर्सेटिलिटी का क्राउन ना दिया हो, बट ऑफ स्क्रीन ही हैज प्लेड मल्टीपल रोल्स सक्सेसफुली। So don't believe me? Then see for yourself. While on the one hand, John is an eco-warrior and an avid animal rights activist, इंसानों के problems पे भी उनका ध्यान हमेशा से रहा है. In fact, in a rather mature statement, John said कि commercial events और शादियों में perform करने के बजाय, he likes participating in events that are meant for social improvement. He has been associated with projects related to education and child welfare. Not too many people know that John Thailand गए थे to build homes along the Mekong River. In fact, he runs John's Brigade, which is part of an international effort called Habitat for Humanity, जो celebrities की मदद से needy लोगों के लिए घर बनाते हैं. He has been named the Habitat Global Hero for his contribution in other countries such as Afghanistan, Bangladesh and Ethiopia. John का फंडा बहुत simple है. उन्हें लगता है that in a country where Bollywood is such a big influence, ये film stars की responsibility है कि वो इन social causes के लिए आवाज उठाएं. But what is really sweet is that John ये सब अपनी मॉम को दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भी कर रहे हैं.
जी हाँ, John, quite the Mada Ladla, had promised his mother that when he had started earning enough, he would contribute meaningfully to the society. He has kept his word. Animals को बचाने से लेकर marathons में participate करने तक, John has chosen a wide variety of causes to support. आज वो अपने signing amount का 10% अपने charitable causes को देते हैं, making him one of the few actors whose charitable actions speak louder than words. In fact, John has even broached a taboo subject like sperm donation through his maiden-home production Vicky Donor. John कहते हैं that such issues which people don't discuss freely in India can also be discussed in a clean, aesthetic manner through cinema. First, a supermodel, then an actor. And while shoots and promotions take up so much time, John has not rested on his laurels. He is still trying to win over critics who are not fully impressed, choosing performance-oriented roles, and all that while not forgetting that he has to give back to the society and those who are not as privileged as him. मान गए आपको जॉन, यू आर ट्रूली अ देसी बॉय जो अपनी कंट्री के लिए कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहता है. Hats off to John, your real life deeds have truly made you a role model for me. मतलब मैं आपके ऐसा हॉट हंग तो हूँ ही, मतलब बन सकता हूँ, मतलब बन जाऊंगा. But more importantly, I want a heart as big as yours, जिनमें सबके लिए इतना कंसर्न और प्यार हो. Well, जॉन इब्राहिम की रील और रियल लाइफ की बातें हम जारी रखेंगे, but I need to do some push-ups and build up my body. Yes, we'll take a small break and come right back. Coming up, while John has made the term Dostana popular for other reasons, but when it comes to being a friend in need, John comes out on the top again. कभी वो यूथ को ड्रग्स से दूर रहने की सलाह देते हैं, तो कभी वोटिंग की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं. देखिए बाबा जॉन के अनेक रूप एक छोटे से ब्रेक के बाद. Stay with us, क्योंकि John seems to be just rising on the hotness meter. हेलो जी हेलो, ये देखो मेरे डोले, ये देखो मेरे शोले और बाद में नीचे गिरे हुए छोले. पर जो रहने दीजिए, अब जॉन के सामने आई एम दाल बराबर मुर्गी. बट जॉन आपके जैसे नहीं है. ही इज अ ट्रू फ्रेंड जिन्होंने अपने वेल विशर्स का साथ हमेशा निभाया है. Over the years, he has also become an icon for the youth by saying no to drugs, smoking and alcohol. In fact, ना ही उन्होंने खुद पर कंट्रोल रखा है. He has also encouraged the young fans to act responsibly. And while on the topic of being responsible, John took up the unique challenge of encouraging youngsters to vote. देखा, John does not have to motivate you in the gym alone. He has become an all-rounder, an icon in every sphere of his life. John may have slipped his swimming trunks dangerously low in real life while playing a hot young photographer in Dostana. लेकिन real life में John is a true friend who stands by his friends at all times. उनकी simplicity और sincerity ही तो है जिसकी वजह से अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार भी उनके खास दोस्त हैं. In fact, अक्षय and John bonded so well on the sets of Desi Boys कि उनकी फिल्म के हिट होने की खुशी में John gifted अक्षय a sleek new bike in his favorite color. और तो और, when Akshay held a karate tournament, John agreed to come and motivate the youngsters. MS धोनी के साथ भी उनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि दी इंडियन कैप्टन जो आज तक फिल्मों से दूर रहे हैं, वो भी जॉन की फिल्म प्रोडक्शन का हिस्सा बन रहे हैं. When director Sanjay Gupta was going through a rough patch, John helped him out by agreeing to star in Shootout at Badala. Wakai, an actor, a model, an environmental activist, an animal rights supporter, a fitness role model, and an ideal son and friend. John ने real life से भी ज्यादा real life में ये roles निभाए हैं और क्या बखूबी निभाए हैं. He is a hero in the true sense of the word, both on and off screen. Maybe that's why when the time came to encourage youngsters to vote, John से बेहतर role model का मिलना मुश्किल था. John became the ambassador of a campaign that asked people to vote and exercise their franchise. जी हाँ, वैसे तो हमारे stars कहते हैं कि उन्हें politics में कोई interest नहीं है, लेकिन how many of them actually take an interest in who is leading our country? John took up this mantle and reaffirmed कि वो वाकई Indian youth के लिए एक perfect example है of what really makes a complete man. A fit, successful, caring and socially responsible individual जिसने success के steps चढ़ते वक्त बाकी सबको पीछे नहीं छोड़ दिया. John, desirability से आपका ये दोस्ताना वाकई काबिले तारीफ है. इस knight in shining armor का क्या कहना? Not even 40, but उनके list of achievements तो देखिए. First a supermodel, then an actor, and while shoots and promotions take up so much time, John has not rested on his laurels. एक simple background से आए हुए John को पता है that he has made it with a lot of hard work and also a lot of good luck, which is why he wants to make every second count. लेकिन जॉन की लाइफ को देखकर एक बात तो साफ है कि the ones who live fearlessly live successfully. मेरे बॉयज हमेशा कहते हैं, विवान सुन लो ये ज्ञान, माचो मैन वही बनता है जिसका बड़ा हो दिल.
On that note, goodbye from all of us at Beyond Lights, Camera and Action, brought to you by Zeno Deodorant. Live fearless.